हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल बुक्स। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेकर। आज मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी अपना DIY। इस DIY में मैंने जो है 4 प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, जो कि सीधा मैं अपनी किचन से लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पे इस टाइम कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, और जो ये फेस पैक है वो आपको इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करेगा, प्लस जो गर्मियों में आपके फेस पर जो टैनिंग आ गई है वो इंस्टेंटली रिमूव करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना DIY। टू मेक दिस फेस पैक कम स्क्रब यू विल नीड अ बाउल, 1 teaspoon of coffee powder. Coffee is a rich source of antioxidants. It's a natural skin lightening agent. It protects from your harsh sun rays, makes the skin smooth and bright. It also helps in removing the hyperpigmentation. Then you need half teaspoon of turmeric powder, means haldi. We all know turmeric is an antiseptic. It has anti-inflammatory and antibacterial benefits. It reduces redness from blemishes. Turmeric is excellent for acne because it is a natural antiseptic and helps to kill the bacteria. Then you need 2 spoons of honey. Honey has antibacterial and nourishing properties, which makes the skin so soft and supple. Then you have to add some drops of lemon. Lemon is a rich source of vitamin C and has citric acids, so it can help in brightening and lightening your skin. Mix well and makes the paste smooth. After that, apply on your face. You can use a flat brush to apply, but I prefer to use my fingertips as it picks all the tiny particles well. Do gentle massage also. आफ्टर 10 मिनट्स मैंने अपने फेस को अच्छे से पानी से माइल्ड फेस वॉश से मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया और पैड ड्राई कर लिया है। देख सकते हैं कि मेरे फेस पे एकदम इंस्टेंट ग्लो दिख रहा है, और मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, बस मैं अपने फेस को वॉश करके आई हूँ, और आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट आपको ग्लो दिख रहा है। एज अ मास्क आप इसको रोज़ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको एज अ स्क्रब यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको वीक में 2 बार ज़रूर यूज़ करें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको एज अ फेस मास्क रोज़ यूज़ करना पसंद करती हूँ, और मैं एट लेट इवनिंग इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि हल्दी का कलर जो है वो कपड़ों में लगने का डर रहता है, जो कि मैं डे टाइम में या सुबह मॉर्निंग के टाइम यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको लेट इवनिंग ही यूज़ करती हूँ।